नाजरीन, मैं हूं सादिया निसार, आपकी होस्ट। और आज हम आए हैं घड़ियाल न्यूज़ के थ्रू इंडिया के एक जाने माने शख्सियत के विचार जानने, उनके ख्यालात जानने। वैसे तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मगर फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो जिनसे हम आज मिलने आए हैं वो इंडिया के एक मशहूर एंटरप्रेन्योर है, सोशल एक्टिविस्ट है, फिल्म मेकर है। और मोर ओवर उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम अपनी ज़िंदगी में किए हैं, जैसे कि उन्होंने AGS आर्मी गुडविल स्कूल्स को फंड किया है थ्रू CSR विच इज़ फाउंडेड बाय इंद्रानी बालन फाउंडेशन, विच इज़ रियली ह्यूज। एंड इनके बहुत ही अच्छे अच्छे काम है, जैसे कि इन लोगों ने डिसेबल्ड स्कूल्स को भी यहाँ पे फॉर्म किया है। एंड देयर इज़ द स्कूल कॉल्ड परिवार स्कूल विच इज़ फंडेड फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. So, sir, first of all, it's an immense pleasure for us to have you here. थैंक यू। And, sir, now I would like you to add something to these points. मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने में कि 370 एवोकेशन होने के पहले से ही हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और जैसा 370 का एवोकेशन हुआ तो आई एल बी प्राउडली भी बोल सकता हूँ कि आई एम द फर्स्ट नॉन JNK के एंटरप्रेनर हु हैज़ पुट अ फुट हिल in JNK, and we are doing immensely good work Yes, sir. with the Indian Army. Yes. Indian Army has always welcomed us warmly initially also, और अभी भी we are working with the Indian Army. और हमारा जो प्रोजेक्ट है इंद्रानी बालन फाउंडेशन और 15 करोड़ का, उसमें यही है कि जो 10 आर्मी गुडविल स्कूल्स है विच इज़ जो सिविलियंस के लिए हैं, ये स्कूल्स कम्प्लीटली उसको फंड भी हम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी देती है और एजुकेशनल सपोर्ट। इसके पीछे की रीज़न्स काफ़ी है। मेन रीज़न है कि बच्चों को एक तो एजुकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है एजुकेशन, वो मिले। सेकेंड नीड है कि जो बाकी के स्कूल में यहाँ क्या सिखाते हैं वो पता है, तो वो ना सीखते, एक ब्रॉड माइंडेड ब्रॉड विजन से जो सीख सकते हैं, ये हम ये AGS स्कूल से उनको सिखाते हैं। एज ऑन डेट अगर आप पूछोगे तो 4500 स्टूडेंट्स ये 10 स्कूल्स में ये इनके एडमिटेड है, दे आर स्टडिंग ऑल्सो, और इनकी रिजल्ट्स भी है वो काफ़ी अच्छी है। जो भी 10th पास होते हैं दे आर कमिंग अप विद ब्राइट नंबर्स। एंड इन शॉर्ट वी हैव ओनली वन मोटिव कि जो भी स्टूडेंट है, whenever they are getting educated, they should be educated and their vision should not be narrow, it should be broad. It has to be broad. Yes, because आगे जाके यही नौजवान इस देश को चलाएंगे, and they'll be a part, they are going to be the future of this country. And Yes. yeah, they're gonna be polished through your good Polished through us, and they'll be the future of our country. Yes. So that is the most fortunate thing for them also. Exactly. And for us also to make these educate these children, and give them that support. Exactly. So, sir, rather than this, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आपके बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, इसके मुतालिक हमें कुछ बताएं। See, in business interest, so we have a lot of interests. Our core business is construction. We are doing it in Pune, Bangalore, Mangalore, Dubai. Apart from this, we have an IT company in Spain, where we have the largest जो टेस्टिंग ट्रैक है गाड़ियों का, जो ARI रहता है उस ग्राउंड पे करते हैं। हम लोग एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में हैं। एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ऑफ मूवीज़ है। जब हम मूवीज़ का बात करते हैं तो रीजनल मूवीज़ तो करें, बट हम लोग शॉर्ट फिल्म्स भी करते हैं। कश्मीर पे 2 शॉर्ट फिल्म्स, एक कश्मीरी लड़के ने, रूफी खान बोल के, ही इज़ अ डायरेक्टर, ही हैज़ डायरेक्टेड इट, ही हैज़ रिटन एंड डायरेक्टेड इट। सो दैट इज़ द सपोर्ट दैट वी गिव। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, हम वी हैव 6 टीम्स हैं। हाँ, जो अलग अलग जो फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स रहते उसमें हम वी ओन टीम्स। वो बैडमिंटन रहे, टेनिस रहे, हैंडबॉल रहे, टेबल टेनिस रहे या खो खो रहे। अभी जब आप खो खो की बात करोगे कि हमारे कश्मीर से ही एक नौजवान उमर रातर, जो आई थिंक बड़गाम का है, वो हमारे ऑक्शन में से हम लोग ने उसे हमारी जो मुंबई की टीम है उसमें लिया और वहाँ से खेला। ही प्लेड द फर्स्ट इनॉग्रल सीज़न जो लास्ट ईयर अगस्त में हुआ पूना में, ही प्लेड। स्पोर्ट्स डिवीजन में हम लोग अलग अलग एथलीट्स को हायर करते हैं। हमारे पास 60 एथलीट्स आर साइंड विद अस, वेयर वी नॉट ओनली प्रोवाइड देम फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन उनको हम फाइनेंशियल एज वेल एज
जो भी उनको उनके स्पोर्ट्स Basic रिलेटेड necessities, yeah, ट्रेनिंग्स है, कोचेज़ है, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं. अगर आप कश्मीर की बात करोगे या जे की बात करोगे, जे से 4 एथलीट्स हैं आज हमारे डिवीज़न विद. जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तो इससे जो यूथ है उनको सपोर्ट करना, उनके टैलेंट को सपोर्ट करना. अगर आप देखोगे कि आप तो सुने रहोगे कि आफरीन हैदर, बिल्कुल सर, ऑल इंडिया नंबर 1, बिल्कुल शी इज़ मार्शल साइन, आर्ट्स प्लेयर, या taekwondo player. She taekwondo is with player. us for signed with us for next 5 years. There is one cricketer. He is also from Srinagar. His name is Umar Shah. Okay तो sir. ही इज़ प्लेइंग विद आर इन आर क्रिकेट एकेडमी. पुनीत बालन, केदार जादव जो क्रिकेट एकेडमी है पूना में आके ही इज़ ट्रेनिंग, ही इज़ एमिंग फॉर IPL. विल हेल्प हिम. We have Mohammad Salim from Baramulla, professional cyclist, and Umar Atar from again Badgam from in Kho. So we have different people, 60 athletes of different fields signed with us. Yes, sir. So that means, sir, you have been promoting youth for a very long time, and it's a great thing to build the backbone of our country. And so, rather than that, I have this question कि आप यहाँ आए हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल से पहले, जैसा कि आपने भी कहा, और आजकल हम देख रहे हैं कि अब नए नए बिजनेसमैन वगैरह यहाँ आ रहे हैं. तो सर, किस चीज़ ने आपके दिल को माइल किया कि आप कश्मीर की तरफ आ फेरे, बल्कि आप बाकी नेशंस, बाकी जगहों को भी सर्व करते हैं, बट स्पेसिफिकली कश्मीर ही क्यों? See, it's very simple कि कश्मीर ही क्यों. कश्मीर हैज़ बीन and is always going to be an integral part of our country, of India. People go outside India to Switzerland and various places, but I'll say the Switzerland better than Switzerland, whether it comes to tourism, whether it comes to nature, whether we talk about the Kashmiri apples also, Yes, the sweet which are apples very and the famous. apricots. Huh? So Kashmir is such beautiful place. Even today, the weather has changed Yes, thanks to me, because whenever I come to Kashmir, I bring good luck आप आ and गए, good, बाहर आ yeah, and I गए. bring good weather also along with me. So that's why we thought that being a part of India, we know there is a lot of talent in the youth here, Exactly, sir. which has not been they have not been exposed to. और जब when not been exposed, जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ की यूथ जो है वो चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, या जो भी उनके उनमें एवरी यूथ हैज़ हिज ओन टैलेंट, Talent, ही exactly. और शी. तो दे आर नॉट बीन गिवन दैट Chance and justice platform. and chance or platform to perform. So as a foundation, as a group, and with the in the association with the Indian Army, we will always support. And I've said this before also in my previous interviews, that whatever power is required undoubtedly to support these youth in association with the army, we will do that to promote them. That's great, sir. That's great. That means you're enhancing in every way. And you're trying to bring out that talent which is hidden inside the blooming buds of Kashmir. And that's really new and that's really great. And it's kind of an inspiration that you have set all for all of us. So, sir, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ करने से पहले हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, जिसे देखकर एक इंसान इंस्पायर होता है कि मैं इस चीज़ में आऊँ आगे और लोगों को सर्व करूँ, यूथ को सर्व करूँ. तो सर, आपकी ज़िंदगी में ऐसा रोल किन्होंने प्ले किया था? I think the role model in my life is my mother only, under whose name this ये जो फाउंडेशन है, जी. ये उनके नाम से ही हम चलाते हैं. उसका रीज़न ये है कि 2007 में उन्होंने यू कैन से एक मेरे से उन्होंने एक प्रॉमिस भी ली थी और एक एडवाइस भी दी थी कि अगर ज़िंदगी में ही शी सेड कि बेटा अगर तुम 1 रुपया भी कमाते हो तो उसमें से 30% जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है वो दे देना. 40% is more than enough for you to live a good luxurious life, Luxurious life. and जो 30% है you give it back to the society and for the society. And I think we are following the same legacy, and she's been my role model. She herself has been she was a teacher, so teachers you know how they are, कैसे Yes, sir, पढ़ाते हैं. exactly. And being her own son, बहुत अच्छा उन्होंने संस्कार और ये सब पढ़ाया, and she is my role model. Looking at her, we do all this work. So, well, that's a really heart-touching and heart-coring thing
जबकि आप ही के घर में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल हो, तो फिर ज़िंदगी का तो इंसान शुक्र अदा कर ही जाता है. So moreover, rather like placing all these things aside, business, your work. So let's come to your personal life. We heard that you got recently married. So how do you find Kashmir? How do you inspire people, and how can you count that this place is beautiful for the couples? It is because even before I got married, my wife and I have been visiting. In fact, the परिवार स्कूल that आपने जो मेंशन किया है उसके बारे में यही कहूँगा कि जो नया बिल्डिंग जो बांधा था for the expansion of school, that project was undertaken by wife only. She looked after it, so she has been here couple of times. I have come with her also that time, and before our marriage also I'll say that the tallest high mast flag in Shofian. I was getting married on 5th of February, but we made sure that we have to give back something to this for this country. So on 26th of January we inaugurated that and then got married on 5th of February last year. Wonderful. And she also enjoys this. I have always said on my, if you see, whenever I am in Kashmir, I put it or in JNK. So I say this is my second home. So it's happy to be back to the second home. So well, that's something which touches everyone's soul and the beauty of Kashmir. And as you earlier said, आपके आने से तो बहार ही आ जाती है कश्मीर में. तो we would love to have you again and again in Kashmir. So sir, more than this, आपकी future plans क्या है? अभी आपका क्या motive है future को लेकर? See, our future plan is very clear here. We'll be supporting more schools with the army, and not only in Kashmir, but already we are working in Jammu as well as Leh Ladakh also. Militancy से जो affected families have, we are identifying because when an incident happens, which we condemn, when the head of the family or the head of the families are not there, then it affects the children. So we will be supporting with the army, and our foundation will stand by these children, and we will make sure that we educate them till the highest level, till their complete education, graduation is done. We'll support their education completely. So whether it's in Jammu, Kashmir or wherever, so all these children we'll be identifying these children and supporting their education. So sir, now I would like to ask you कि future में आपका क्या plan है sports के स्पोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए स्पोर्ट्स के फील्ड में आप किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं फ्यूचर में? See, जैसे we have supported few athletes from the valley. In future also, if there are any athletes who require financial as well as complete support, we will be happy to support them. They can contact our office or they can contact the 15 Courier. Apart from this, हमारे पूना में we have these different cricket leagues. The youth of Kashmir, I know they love cricket and they love soccer, if I'm not mistaken. Yes, that's So going further, for this coming year, we will organize a cricket, a mini IPL kind of league in the different districts of Kashmir. Uh, Obviously not without the association of the army, with the association of the army, and also the football league. So these will be the major aspects or future plans that we will do. So where the youth can come, they can showcase. Personally, I have a lot of friends, whether it's Yusuf Pathan, Irfan, John T. Rhodes. They are all close friends of mine. We'll try, when these leagues are happening, ये जब leagues हो रहे हैं, तो we'll try to organize that these people come over here and also train these kids. A small 2 days sessions, yes, kind of thing. exposure. And as we have an academy in Pune, the Punit Balan Kedar Jadhav Academy, so we will look forward to take a very well-known, renowned cricketer who has played for India or who is currently playing also maybe, and open an academy in the valley for the youth. Well, that's great news for the youth of Kashmir, though, who are really inclined towards this game. So, sir, more than this,
आपकी क्या मैसेज होगी यूथ के लिए, टू द यूथ who have like kind of who are inclined towards or who are hunted by the social levels of the society? What would be your message for them? See, the message for the youth is very clear. Uh, it is up to the youth how they want to transform their energy into a negative way or into a positive. Because I think a positive way, it takes time, but it has a longer vision. A negative way is short term. And I'll be very bold enough to tell that whatever the youths have been taught or they have been brainwashed in the name of Islam or jihad, and where they are into drugs and weapons, it's not going to help anyone. Because if the youth who pick up or are in this path, after them, whenever there any incident happens, their families suffer. Exactly, sir. The youth of Kashmir, they have to need, and all the youths here, they have to think whether they want to suffer, want their family to suffer for life, or their family be happy and see the success of the kids. So I'll tell my message to the youth is here is the same thing, that only focus on positive things and look towards the positive direction and not towards the negative direction. Sir, what would you like to convey to the daughters of Kashmir? I'll convey to the sisters of Kashmir, because I have all my sisters here, and I'll convey to them that yes, though Kashmir is the Kohinoor of India, but there are different jewels also, like ruby, emerald, in different parts of India or states of India, and not to restrict themselves to the valley only. They should come to other states and explore, whether it's in the field of art, culture, whether it's entertainment, or even if they want to become entrepreneurs. If there are any startups which require the seed funding, or any in related to any of these, as a group, we are open to discuss and meet them also, and give them that support, so they can come out and take that exposure of coming out and seeing the rest parts of the country also. Well, sir, thank you so much for being here, and all the best with your all the good motives towards the youth, towards the society, and may Lord bless you with the infinite happinesses. That's all what I could say right now. सो जनाब, ये थे पुनीत बालन साहब जो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे. तो उम्मीद है आप सबको आज का शो पसंद आया. बाकी वसलाम.